हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे ही होंगे सब लोग. सो वेलकम टू आवर चैनल. नाउ ये चैनल में अभी आपको कुछ रैंडम टॉपिक्स इससे पहले मिले हैं. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर जस्ट सॉल्विंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन विद द टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहेंगे कि मैम किस एग्जाम के लिए है. सो दीज आर फॉर आरपीएससी ग्रेड 1 स्पेसिफिकली. हाँ, कई जगह और भी यूज़ आ जाता है, बट जो आरपीएससी ग्रेड 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और दोज हु आर हैविंग इंग्लिश लिटरेचर एज सब्जेक्ट, तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली यूजफुल है एंड अदर्स कैन ऑल्सो लाइक टेक सम एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, yes, which of the following is necessary for becoming an effective teacher? So पहला प्रश्न आपके सामने है, which of the following is necessary for becoming an effective teacher? So just get the question and these are the four options. Option A is he or she knows his or her subject well. Second option is he is having proper knowledge of teaching methods. Then the third one is he does maximum possible interaction with his students, and the last one is all of these. Now इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बट वो कंफ्यूजन कब नहीं होता है, जब आपने कंटेंट को अच्छे से समझा है और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आप बहुत ध्यान से समझ रहे हैं. तो यहाँ पूछा था कि इनमें से इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या नेसेसरी है. तो भाई इफेक्टिव टीचर बनने के लिए अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना भी नेसेसरी है. सो द फर्स्ट थिंग, ही और शी नोज हिज और हर सब्जेक्ट वेल, बिल्कुल ज़रूरी है. देन द सेकेंड थिंग, ही इज़ हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स. येस, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. अपने सब्जेक्ट के अलावा हमें अपने जो भी सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड्स हैं उनकी भी प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है. देन थर्ड ऑप्शन था यहाँ पर, ही डज maximum possible interaction with his students. Yes, this one is also true that a teacher who is an effective teacher actually interacts with his or her students to a maximum extent. So here the answer will be D, all of these. ठीक है. Now let's move to question number 2. Question number 2 is a good teacher. Then there's a dash. Options are: option A, encourages the learner for activities. Option B, nourishes the curiosity of learners. Option C, motivates the learners to participate in the classroom. And option D is all of these. Now just learn from your past experiences. अभी previous question में जो आप लोगों ने देखा, जो आपने आंसर किया, उसी को यहाँ पर अप्लाई करोगे ना कुछ चीज़ों को, तो भी आंसर इजीली आ जाएगा. कंफ्यूज होना ही नहीं है. यहाँ पर आप देखो गुड टीचर लिखा है सिर्फ, ठीक है. अब गुड टीचर ये करेगा या नहीं करेगा? encourages the learner for activities, डेफिनेटली करेगा, ठीक है. अ गुड टीचर विल ऑलवेज encourage the learners for activities. then second thing, nourishes the curiosity of learner. वही तो करना काम है टीचर का, लर्नर की क्यूरियोसिटी को नरिश करना ही तो सबसे बड़ा काम है, तो वो भी करेगा एक अच्छा टीचर. then the third thing is motivates the learner to participate in the classroom. definitely a good teacher is going to do this thing also. दोनों क्वेश्चन सिंपल थे and here also answer is D, that is all of these are the characteristics of good teacher. Then question number 3 is, which of the following are the parts of teaching process? Now this is important question and यहाँ आपसे पूछा है कि इन options में से which are the parts of teaching process, शिक्षण की प्रक्रिया या teaching process के क्या पार्ट्स, क्या हिस्से होते हैं. सो ऑप्शन ए इज टीचर, environment and curriculum. Option B is teacher, student and curriculum. Option C is student, teacher and society. Option D is teacher, society and curriculum. So what you will say, what is the answer? So बहुत ही confusing सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा. टीचर, environment, curriculum दिया हुआ है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम दिया हुआ है, स्टूडेंट, टीचर एंड सोसाइटी दिया हुआ है, टीचर, सोसाइटी एंड करिकुलम दिया हुआ है. तो बच्चों यहाँ से इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं.
टीचर एनवायरनमेंट करिकुलम यहाँ स्टूडेंट को मेंशन ही नहीं किया है। और जब हम टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि टीचिंग हो रही है, अगर टीचर इज टीचिंग तो टू whom ही इज टीचिंग, ही और शी इज टीचिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लर्नर्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो उसको हमें एक्सक्लूड कर देना है सीधे से, ठीक है। नाउ सी दिस वन, जो हमने यहाँ अप्लाई किया वो यहाँ भी अप्लाई कर दोगे कि टीचर सोसाइटी और करिकुलम दिया हुआ है, तो भाई टीचर सोसाइटी करिकुलम में भी लर्नर्स का नाम ही नहीं है। अब कहाँ कन्फ्यूजन बचता है हमारा, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। वी एलिमिनेटेड टू ऑप्शंस। नाउ बी is teacher, student and curriculum, and C is student, teacher and society. Now see, out of these आपको ध्यान रखना है when we talk about teaching process, तो teaching process में होता क्या है कि teacher, ठीक है, will teach the students a specific curriculum. Now it is true that that curriculum is actually designed according to the society, ठीक है। जिस सोसाइटी के वो दोनों पार्टिसिपेंट हैं, टीचर या स्टूडेंट या जहाँ भी वो प्रोसेस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन इन दोनों में से अगर हमें चूज़ करना है तो ये तो भाई डायरेक्ट जो चीज़ मिल रही है उसके लिए हम इनडायरेक्ट पे क्यों जाएंगे। टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड, तो वहाँ हमको एक इनडायरेक्ट ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हियर द आंसर विल बी बी, दैट टीचर, student and curriculum are the three parts of teaching process. Now let's move to question number 4. Who defined teaching as a system of actions intended to produce learning? Now those who are preparing for grade 1, now इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। सो सिंपली यहाँ डेफिनेशन है एक टीचिंग की, उसको पूछा गया कि किसने टीचिंग को ऐसे डिफाइन किया था, कैसे, एज अ सिस्टम ऑफ actions which are intended to produce learning. So this definition of teaching was given by whom? A. Burton, B. Smith, C. Morrison and D. Amidon. So this was given by B. Smith. So answer here is B. Smith. Now let's move to question number 5, that is which of the following is not true about टीचिंग। द 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, इनमें से टीचिंग के बारे में क्या सच नहीं है या कौन सा कथन गलत है। ना ऑप्शन ए इज इट इज़ अ प्रोफेशन, option B is it is an interactive process, option C is it may be carried out in different forms, and option D is it is unorganized. So क्या है चारों में से बात कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो एक ही बात गलत है, 3 तो सही होंगी क्योंकि आपसे यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो ऑप्शन ए इट इज़ अ प्रोफेशन, यस इट इज़ अ प्रोफेशन, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देन सेकेंड इज इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, यस इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, द टीचिंग प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन learner and the teacher. Then the C is it may be carried out in different forms, yes teaching may be carried out in different forms because a teacher can use variety of methods while teaching, or he or she can adopt different teaching style while teaching. And the last one is it is unorganized. So this is not true about teaching. टीचिंग अनऑर्गेनाइज्ड होती है यानी अव्यवस्थित होती है, तो नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसको कंडक्ट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फसाइजेज दैट नीड्स ऑफ लर्नर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड एवरी प्रिंसिपल इज हैविंग डिफरेंट थॉट और डिफरेंट आइडियोलॉजी, ओके। नाउ there are 4 options. Now what you have to tell that which principle actually emphasizes that needs of the learners are very important. Option A is principle of planning, option B is principle of flexibility, option C is principle of motivation and interest, option D is principle of child centeredness. Now here you simply need to remember that the needs of learner are very important. It is actually stated by the principle of
child centeredness. So child centered education is a new ideology or modern ideology in education, and this is being followed nowadays, and according to that ideology the needs of the learner should be the center point of the whole education process. Now here the answer is principle of child centeredness. Now अगला प्रश्न जो है 7th question, which maxim of teaching is derived from Gestalt School? So there are various schools of psychology and similarly there are different maxims of teaching. Now आपको यहाँ एक क्वेश्चन इंटरलिंक करके पूछा गया है that which of these maxim is derived from the Gestalt School of Psychology. Now 4 options are known to unknown, whole to part, then the C is near to far and the D one is concrete to abstract. So बच्चों यहाँ आपने जिसने पढ़ा है आप इजीली बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट स्कूल से इनमें से एक ही मैक्सिम डिराइव करना है, दैट इज whole to part, as Gestalt psychology focused over studying things into wholes. Gestalt जो word है it actually means a whole. ठीक है, तो now we will move to the next question. Question number 8, which of the following process is not related to interactive phase of teaching? There are different phases of teaching. Now here the question being asked is about interactive phase of teaching and you are being asked कि इन चारों में से कौन सी प्रोसेस जो है वो इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है. नाउ सी, ए इज परसेप्शन, देन बी इज क्रिएशन, सी इज डायग्नोसिस एंड डी इज रिएक्टिव प्रोसेस. तो बच्चों याद रखो इस चीज़ को कि जो इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है जिसको एक और नाम दिया जाता है एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ टीचिंग या एग्जीक्यूशन फेज ऑफ टीचिंग, उसमें परसेप्शन होता है, डायग्नोसिस होता है, रिएक्टिव प्रोसेस भी होती है, लेकिन क्रिएशन नहीं होता है. सो क्रिएशन इज द आंसर हियर बिकॉज क्रिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव फेज ऑफ teaching. Now question number 9 is dependent variable in teaching process is. Now 4 options are given. Which of the following is dependent variable in teaching process? So A teacher, B curriculum, C classroom and D learner. So I told you that here the dependent variable is being asked. So dependent variable क्या होता है? लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है. टीचिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लर्नर. यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज. नाउ 4 ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव, बी मेमोरी, ऑप्शन सी परसेप्टिव एंड ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग. सो हियर यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. देयर आर 3 levels of teaching if you remember. Now this is memory level of teaching, then there is understanding and highest जो level of teaching है that was reflective level of teaching. So here you are being asked about the highest level of teaching, तो कौन सा हो जाएगा? Reflective. Answer will be A. Now question number 11 here is which of the following is correctly matched? You are given some combinations and you have to tell which of the following is correctly matched. Option A reflective Morrison, option B memory Hubbard, option C understanding Hunt and option D all of these. तो previous question का just continuation ही ये question है, ये मान लीजिए. ठीक है, now we have seen कि ये 3 level होते हैं. See, these are the 3 levels. Now here you need to remember the name of Hubbard at memory level, then understanding में Morrison and reflective में Hunt. These are the 3 names you need to remember. Now let's see that question. What was that? Reflective में Morrison लिखा है, so that is not right. Reflective में Hunt आएगा. Then memory में Hubbard लिखा है, yes that is right. सी अंडरस्टैंडिंग में हंट लिखा है तो वो उल्टा है. अंडरस्टैंडिंग में मॉरिसन आएंगे और रिफ्लेक्टिव में हंट आएंगे. सो ऑल ऑफ दीज यहाँ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए मेंशन किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग रेफर्स टू.
सो आउट ऑफ दोज 3 लेवल्स किसको प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग कहा जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी लेवल टीचिंग, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. So you need to remember that the reflective level teaching, the highest or the most complex level of teaching, is named as the problem centered teaching. Now question number 12 is, which of the following is not a characteristic of effective teacher? Out of these 4, which of these is not a characteristic of effective teacher? Option A flexibility in teaching, option B warmth, option C lack of dynamism in teaching style, and option D organized teaching. So out of the questions which we have already covered, now you can answer this very easily. So flexibility in teaching, yes, it is a characteristic of effective teacher. Now warmth, yes, that is also a characteristic of effective teacher. Lack of dynamism in teaching style, that is not a characteristic of इफेक्टिव टीचर. यानी एक टीचर में डायनेमिज्म नहीं है, टीचिंग स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो इफेक्टिव टीचर की विशेषता नहीं है. सी द लास्ट वन, ऑर्गेनाइज टीचिंग, यस, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर. So this was all for today. If you like the video, please like the video, share it, subscribe to my channel, and also you have to comment if you like things about it and what kind of topics you want now on my channel. You can share your thought about that. So I'll be presenting the topics which you need, या जो भी आपको difficult लगते हैं specifically, तो वो topics हम आगे लेकर के आएंगे आपके लिए. That's all. Thank you.